अभी तो शायद हाँ लाइव बस वो कट करने से कैसे एक बार देखो लाइव 4.13 मिनट्स हो गया 4 बस इतने 4 मिनट हुआ Please. Madam. हाँ जैसे कि नहीं सर्च Yes.
A very good afternoon to all the distinguished guests present in the hall. As we know, we have gathered here for the valedictory session of the 2-day-long seminar on myth, history and culture. It has been fascinating pondering upon the tricky relationship of these three concepts. As some history lies in the core of every myth, and myth is an integral component of all historical accounts we see. When these two get intertwined into one and starts affecting the shared way of life of a group of people, they become culture. It has been an interesting and engaging journey of 2 days, which is going to take a pause with this valedictory session. Remembering the spirit of our college, prevalent in the conscience of Vasant Kanya Mahavidyalaya, energizing every soul, every particle present here, our revered Ma Vasant, I would like to seek your permission for the formal beginning of the session. In the beginning, without going into much formality, I would like to invite our guest speaker, Professor Rana P.B. Singh sir, for his wise words. Before doing so, let me give a formal introduction of our guest speaker. मेरा निवेदन होगा कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज मैं आप ही के बीच का हूँ, कोई उनका जी बिल्कुल प्लीज मेरे ऊपर दया कीजिए। आपका नाम स्वयं ही आपका परिचय देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हमारे बीच हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं और कार्यक्रम की थोड़ी सी हाँ। So Professor Singh is a professor of cultural geography and heritage studies at Banaras Hindu University, Varanasi, and has published extensively on geographical thought, sacred geography, pilgrimage studies and heritage planning in India. He has published over 35 books and anthologies and over 180 research papers. He has delivered lectures in almost all parts of the world on these topics. Without going into much detail, as Sir has instructed me, I would like to say that his expertise and experience makes him the best speaker to talk about the topic, this issue, myth, history and culture. With this little introduction, I cordially invite Professor Singh for his scholarly statement. Welcome, sir. वो स्क्रीन शेयर करेंगे आप नहीं तो
चेयर लेकर बैठ के तो बनाते जाते पौष शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार, आज प्रदोष व्रत भी है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। तो ऐसे मौके पर मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, 50 साल के कैरियर में दूसरी बार आया हूँ। तो आपने बुलाया, इसके लिए पहले बहुत बहुत आपकी कृपा धन्यवाद। और वो जो बात थी उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आई एम वेरी वाइडली ट्रेवल्ड पर्सन, लेकिन कहीं भी मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से बाहर तो नहीं होता है। बाहर एक ही लाइन में कहा जाता है, ही इज राणा फ्रॉम द ग्रेट सिटी बनारस, ओके गो अहेड। और मैं जिस हमारी गुरु बान जी यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनडायरेक्ट गुरु जी का अभी इनके उनसे दर्शन हो रहा है, बीना जी। तो मैं प्रोफेसर आनंद सिंह का स्टूडेंट हूँ, जिनको कहा जाता है डायन एंड फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो ये दो एक लाइन में इसलिए कर रहा हूँ कि आप उस लिंक में देखेंगे। तो उनका एक बहुत सटीक लेसन था। मैं फिर अंग्रेजी में बोलूँगा, चिंता नहीं। तो मैंने दिल की बात कहा थी 2 मिनट में, टाइम में मुझे पता है, टाइम काट दिया गया है, ठीक है। तो गुरु जी का ये था कि कभी भी कोई चीज़ पढ़ो, चाहे मैं कहूँ या कोई कहे, कभी पूरा मत मानना। खुद तुम तलाश के वो देखो कि वो है या नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं उतना टाइम इधर से काट लूँगा। आजकल हम सब लोगों को, पॉलिटिशियंस को, स्कॉलर्स को, सबको एक हो गया है, नया चला है सिस्टम कि हमारा क्या उद्देश्य है, भारतीय से वसुधैव कुटुंबकम है ना। क्या आपने खुद देखा कहाँ है, क्या लिखा है, यही है नहीं, लेकिन फला कहे हैं तो भाई उस नामा में अपने को जोड़कर आप भी कहेंगे कि हमारी संस्कृति है। लेकिन माफ कीजिएगा, जो ओरिजिनल पढ़िएगा, महाउपनिषद के पहले का 3रे खंड की जो है 2री लाइन है, तो उत्तर पहले दिया हुआ है। वो है बड़ उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तुम इतने उदार बन के बन जाओ तब होगा। वो हटा दिया, कह दिया कि यही सब हमारा है। ओके, तो हम जो सेमिनार जो है विद रियलिटी एंड ट्रूथ, दिस द वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हमारे गुरु जी की एक विशेषता थी या बुरी आदत थी, काफी लोग लाइक नहीं करते थे इस बात से। वो अपने को भी कहते, तुम दिख रहे हो कि नहीं, जब ऐसे बोलते थे, दिख रहे हो खुद। तो यह जो एक इंस्टिंक्ट था कि आप उसको खोजिए। पहले आप देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को, इफ देयर इज नो इमेजिनेशन देयर इज नो होप ऑफ रिसर्च। फ्रिज ऑफ काबरा फेमस एलाइड विजन इन फिजिक्स। No way physics can write the last word. The day physics will write the last word, physics is finished. कोई नहीं सकता। तो हम ये फिक्स क्यों करते हैं? अब दूसरी बात, तब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। तो एक तो जो हम लोगों ने गुरु जी से सीखा है, दूसरी चूंकि हमारी फील्ड ट्रेनिंग है, तो हम लोगों के हम लोग दोनों ट्रांजिशन बेल्ट वाले हैं, पुरानी परंपरा भी और नई वाले में जुड़े हुए हैं। कुछ भी हो तो फील्ड से जोड़ो उसको। तो हम लोग 1-1 साल तक फील्ड में लोटा, झोला और कमरा और लेकर के ऐसे मांगते, खाते, सर्वे करते थे। अब और हम दूर हो गए। अब तो हर चीज़ इंटरनेट है, विकिपीडिया नाम की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, so many things we do that is not. I will show you these things. The third thing is, and then I will start. आज के वैज्ञानिक युग में आप वैज्ञानिक पक्ष को डायरेक्ट लेते हुए यदि कोई बात नहीं जोड़ते तो कम से कम वेस्ट में तो आप नहीं कर सकते। आप यहाँ जो भी अपना हवा बना लें, 10 लोग बैठ के ताली बजवा लें, लेकिन वेस्ट में तो आप नहीं कर सकते। गए MIT में बोलने और लगे कि वसुधैव कुटुंबकम, खूब ताली बजी तो अपने आप प्रशंसा में निकाल दिए कि वाह 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 वाह, यही करते हैं ना। तो ये कुछ कड़वे वचन है जैन मुनियों वाला, इसको अदरवाइज लेट मी स्टार्ट विद दिस। दिस इज जस्ट टू गिव यू द वे एंड यू ऑल आर वेलकम वेरी हम्बली। I pray all of you, whatever you think something bad or good, you want to react, please raise your hand and help me. You are always welcome. मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा क्योंकि वो आज बन चुकी है, इसलिए कोई बात नहीं। शुरू हो गया, ठीक है। ये जो लेट मी स्टार्ट विद दिस, नहीं अभी पहले नहीं दी। ठीक है, just to give you this, you see this
this is whole different type of the terminology, landscape geometry. Example is like this, just to understand what is this. Simple way, here is a temple, here is a temple, then here is a temple. Why this triangle? Why they are only here? These are the basic questions. And these we try to understand from myth, reality, pure scientific things, including even MIT, etc. I will give you 1 or 2 examples. And then try to understand the cosmic frame of the landscape. This is the way. And that's why this lecture, after having this invitation, I thought that would be good. But half the lecture will be for Banaras and Kashi, so that you know that what we are missing. We are not trying to understand. Like one thing is very commonly said, this is written in Kashi Khand. How many of us have seen the real critical edition of Kashi Khand? Simply I say, I have never met a person who has seen critical edition, because they are the critical edition. So this is the myth and reality, Didi Kosami book, something like that. Okay, then we say that sacred places. So if you follow Kosami tradition, every place is sacred. The moment your mind is awakened, then you can realize this. This is the element. The third aspect is IKS, Indian Knowledge System. Translate in Hindi. See the metaphor. Translate in Hindi. Bharati Gyan Parampara or Paddhat. Short BJP. Okay? This is the way when we talk about the Indian things. Nijali है बहुत कुछ इनसे ये मैं individually, especially gender और इस तरह के कई व्यंग्यात्मक मार्ग में एक तरह से मेरे गुरु हैं, लेकिन द्रोणाचार्य वाला नहीं, rest किया है इसे, कई बार So this is just to say that where is our real knowledge. It is nothing like always to say that विश्व गुरु बनाएंगे, अरे अपना गुरु बनो ना पहले, अपना गुरु बनो पहले. जैसे एक अभी हम बात कर रहे थे, आज तक काशी पर एक सांगोपांग किताब क्यों नहीं, बता दीजिए वो तो. It took 30 years to prepare the catalog. I have published that. It took 30 years, and not a single book I can say that here is a Sangopang comprehensive book for popular way to understand. You have not very micro level, but nothing like overall. Okay? So when we cite, we have the disease. We see white person. Which is the best book on Banaras? Jaina Ek. Okay? आप सभी तो सुने होंगे. भले आप पढ़े ना हो, लेकिन Jaina Ek का symbol है. Which is the best geographical book on India? India Sacred Geography by Jaina Ek. We are reading them and then giving award. Okay. So these are just to give you that these things we want to decodify it. Next please. Just to give you 1 or 2 as an example like this. You have heard that that is complete alignment in longitude, the 5 temples of Shiva. And all history goes to 9th century before. There are little bit fluctuation. Still study has not been done, but many scholars are projecting without study. That is another problem we face. We never study, but we project, and since we have some artificial dignitary position, we preach and you have to listen. I am not going to deal with it. Just to give this idea. Next. A person I think many of you might be knowing, Leonardo da Vinci. How many of you know Leonardo da Vinci? Anything? Now look here, that how the whole thing has been turned. If you ask why you know Leonardo da Vinci, then it's a Mona Lisa. Yes, are you right? Completely you are wrong. This is big propaganda. Fritz Capra, a living legend in theoretical physics, he wrote a book, The Legendary Mind of Leonardo da Vinci. And that book inspired me to work on Leonardo da Vinci for 7 years. Then we find that, my goodness, the original drawing that is Bertruvian man, not Mona Lisa. Mona Lisa artistic thing, it is okay. But pure scientific things is that. So just to